So we are just discussing about how to calculate an increase. So we know that after an increase of 50%, उसको 2009 में कितने पैसे मिलने वाले हैं एज एन अवार्ड. प्राइमरी स्टूडेंट को कितने अवार्ड मिलने वाले हैं, इज गोइंग टू गेट 150%. सो हमें बात तो पता है, जो भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इट इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल अमाउंट. सो हियर 150%, 150% according to what? According to which amount? According to the original amount, that is of, what is the original amount? It was $100 in 2008, $100. Now I need to open up the percentage. So 150% is actually 150 upon 100. Of means multiplication. $100 can be written down as it is. Look for the zeros and just cut them out. So 0 over here and 0 over here gets cut. 0 over here and 0 over here gets cut. So 150 ones are is 150. This shows us that कि 2009 में उसको कितना अमाउंट मिलने वाली है एज ए अवार्ड. He is going to get $150 as the award. So in 2009, the primary 5 student is going to get the award of $150. You can look at the steps over here. I have done it a bit details over here to explain you guys in a better way. Now let's look at the second part. Calculate the percentage increase in the value of award from 2008 to 2009 for primary 2 student and for secondary 1 student. कह रहे हैं हमसे कि we need to calculate भाई कितना इंक्रीज़ हुआ है 2008 से 2009 में. हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि भाई कितना इंक्रीज़ हो रहा है. पहले हमें परसेंटेज दिया हुआ था, हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, लेकिन अब हमें जो है अमाउंट दी हुई है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि भाई कितना इंक्रीज़ हो रहा है. फॉर व्हाट? For primary 2 student. So primary 2 student comes in this category. हमें increase calculate करना है और percentage increase का formula क्या है? Percentage increase is equals to So what is the formula of percentage increase? So percentage increase is equal to the increased amount percentage increase is actually equal to increase amount. कितना increase हो रहा है, कितनी amount बढ़ रही है, divided by original amount कि भाई previous amount क्या थी, पहले कितनी amount थी, and multiplied by 100%. So if you look at the first question, that is primary 2 student, they're actually talking about this category that is right here. So if you look over here, we need to first calculate the increase. हमें सबसे पहले यहाँ पे increase calculate करना है कि भाई increase कितना होने वाला है. So if I look at the increase amount, increase हमेशा कैसे calculate करते हैं? Increase का formula होता है हमारे पास new amount minus old amount. इसका हम एग्जाम्पल होंगे. लेट्स सपोज हमारे पास जो है पहले 5 एप्पल्स थे और 5 एप्पल्स जो हमारे पास थे पहले थे. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारे पास 15 एप्पल्स हैं. पहले 5 एप्पल्स थे और 15 एप्पल्स हो गए हमारे पास. तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितने एप्पल्स बढ़े? तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 को माइनस करेंगे 5 से, तो आपका जवाब होगा कि भाई 10 एप्पल्स का इसमें इजाफा होगा. सो माई न्यू अमाउंट इज़ ओवर हियर इन दिस कैटेगरी इज़ $100. $100 is the new amount. $100 is the new amount minus what is the old amount? It's $50. So $100 minus 50 is how much? It is basically 50, right? So we have got the increase here. This is my increase. Now what is the original amount? The original amount is $50. So I'm going to put out all the values here in the formula. So percentage increase,
इज इक्वल टू, इंक्रीज कितना हमारे पास आया, द इंक्रीज अमाउंट इज $50 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट क्या थी, पहले कितनी अमाउंट थी हमारे पास, पहले हमारे पास $50 अमाउंट थी, तो $50 विल कम डाउन हियर, मल्टीप्लाइड बाय दी 100%, और हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100% नीचे आ चुका है. Now I'm going to cut out zeros and zeros cut. अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, लेकिन इसको हम सामने से कट नहीं कर सकते हैं. सो इफ़ यू सी ओवर हियर 5 1 ज़ार इज़ 5, 5 10 ज़ार इज़ 50, सो 10 10 ज़ार इज़ 100. सो अगर देखा जाए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, द आंसर इज़ दैट कि हमारे पास वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हुआ है, हमारी वैल्यू में 100% जो है इंक्रीज़ हुआ है. In this way we can calculate the increase for secondary student. I hope the concept is clear to you guys. Let's do it for secondary student. One student, if you see over here secondary इस कैटेगरी में आता है, right? ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास 150 थी, 150 से कितनी अमाउंट हो गई, 200 अमाउंट हो चुकी है. So again we need to calculate the increase first. So increase, writing a shortcut, is equals to new amount minus old amount. What is the new amount here? In this category it's $200 is the new amount. What is the old amount? The old amount is $150. What is the increase? The increase is basically 50 ही डॉलर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं. Now again we have to put out the values here in the formula. In place of increase I will be writing the value of increase, that is $50 divided by what was the original amount. The original amount was $150 multiplied by this 100%. Then we'll be cutting out the zeros. So zeros and the zeros get cut. 5 3s are is 15, 5 2s are is 10. We are left out with 50, 3 and 2. 5 को 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, we will get 100. 52s are is 100 divided by 3. Divide it and look for the answer. What answer you getting? 3 3s are is 9. 1 remainder. Again 0 comes down. Again 3 3s are is 9. Again remainder. If I want to write my answer as a mixed fraction, how we can write is 33, that's the quotient as a whole, 1 as the remainder up, and 3 as a divisor down, and the percentage sign along with this. But if you want to write your answer as decimal, 33 1/3 is your answer in whole as a mixed fraction. If you want your answers as a decimal, what you guys can do is, you know that you're not left out with any other number. अब हमारे पास यहाँ पे और कोई numbers तो है नहीं, you put decimal point here, you will get the 0 down. Again 3 3s are is 9, and so this will keep on moving on. It will be continuing. It's a recurring decimal. So your answer in decimal is basically 33.3%.